Kya, a platform for those who put nation first. मेरे क्या, what about me? दुनिया की किसी आर्मी ने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी थी. All of Indians, we are so grateful for all the service you are doing to the country. Anybody who is against my country is a terrorist for me. It is our duty to convey the message of bold and blood of our soldiers to the youngsters. हमारे आदमी बोझा हथियार वजन लेके पहाड़ पे चढ़ रहे थे, सांस फूल रही थी लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे. कश्मीर में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है पिछले 6-7 साल में, इट इज इमेंस. Nobody could have imagined it. जो अगला युद्ध क्षेत्र होगा वो कम्युनिटी वॉरफेयर होगा, जहाँ पे कि कम्युनिटी में हमारे दुश्मन होंगे. करेज बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये पहला सेक्टर था. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा. कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर एक था भारतवासी. Good evening, everyone. With utmost honor and respect, I welcome each one of you here to our second edition of Mera Conclave. First of all, let us warmly welcome our special guests today, the Army veterans and Veer Naris. For their immense sacrifices on the special day, I would request all of you to give a big round of applause to all of them. All right. Now we have a dance performance lined up for you to pay tribute to the heroes of the nation. This is the performance will be done by 70 Girls Battalion NCC Hyderabad group from Keshav Memorial Institute of Commerce and Sciences. Thank you. कि वो फौजी है, लेकिन वो ये क्यों नहीं समझते कि वो भी तो एक इंसान है. उसके भी घर में माँ, बहन, बीवी और बच्चों से बसता हुआ एक छोटा सा संसार है. जब फौज में शामिल हुआ था तो ये नहीं सोचा था कि वापस उसकी लाश घर आएगी, और ना ही ये सोचा था उस कफन में लिपटी हुई उसकी लाश को देखकर उसके छोटे से संसार की आंख भर आएंगी. साहस कितना है ना उस माँ में जो इस उम्र में भी बेटे को कफन पहनाया है. सोचा था कि कभी उसकी चिता को लकड़ी उसका बेटा देगा, जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, जिसे उंगली पकड़ के चलना सिखाया है. ओ देश मेरे, तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या, तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा. तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा. है अर्ज़ी दीवाने की जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी शाम हो. कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, जिक्र में शामिल मेरा नाम हो. से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं. हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं. कंधों
से मिलते हैं, कंधे कदमों से कदम मिलते हैं। हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। बाहर आ जाओ सब लोग, सबके घर से संदेशा आया है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं। कुछ चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। I think that was one brilliant performance. Must have sent shivers down the spine. So I will request everyone to please settle down as we eagerly await our chief guest today, Madam Governor. She's just about to arrive any time. So I would also request my co-host Arvind ji to share the stage. Empty seats in the front row. Let all our guests arrive and then we'll start the show. We are also waiting for Madam Governor. So request everyone as she arrives, please stand on your places. We'll give a standing ovation and a big round of applause as she arrives, which I'll announce from the stage. Please be seated till then. JK Now, a digital platform for news and views on Jammu, Kashmir and Ladakh. Current news. We cover stories that have potentials to affect people. Views that shape policy and politics. Article 370 was a highly illiberal law. Path-breaking ground reporting brings out ground realities. 30 साल गुजर चुके हैं, वो त्रासदी, उसका दर्द आज भी जिंदा है, आज भी ताजा है। We resonate the unheard voices of marginalized communities. हमें आधार कार्ड दे दिया गया है कि आप इस कंट्री से हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये हमें पता ही नहीं है। Interviews of the people that matter. World-class documentaries explore the truth and facts. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दूसरी फिल्म है हिंदी फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड। Mera is another effort with the stories from the ground of our real heroes. Conclave's tribute to heroes of our nation. Reaching out to the people of the world via power of social media trends. We bring glorious history of land of Kashyapa and King Lalitaditya. Brave stories of modern times. Correcting the errors of history with original facts. Fights the propaganda spread by anti-India forces. JK Now, completing India. As we are celebrating 24th Kargil Vijay Divas, I would request everyone to please stand, give a standing ovation to the army veterans and Veer Naris as they walk in. जिनके वीर
जिनके वीर पतियों ने, उनके जीवन साथी ने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी, ऐसे सब वीर नारियां, उनका हम स्वागत करेंगे। उनके प्रति हमारे दिल में बेहद प्रेम है, आदर है। आप गौरव के पात्र हैं। उनके साथ में जो वॉर वेटरन्स है, हर वॉर वेटरन की लड़ाई की, उनके जंग की एक अलग अलग कहानी है जो अपने शरीर पर रोंगटे खड़े कर देते हैं। प्लीज बी सीटेड। जो वीर वॉर वेटरन्स और वीर नारी यहाँ आए हैं, उनका हम सत्कार करने वाले हैं। जब उनका सत्कार हो गया, फेलिसिटेशन होगा, तब उनके बारे में हम कुछ जान सकते हैं। Gentlemen, our next guests are coming. So I would again request you all to please give a standing ovation again for a master storyteller, Vijendra Prasad, and Major General D.K. Purohit. आप है डॉक्टर विजयेंद्र प्रसाद। आपका फुल नेम है कोडूरी वेंकटा विजयेंद्र प्रसाद। वो पॉपुलर फिल्मों के राइटर है, आप सब उनको जानते हैं। इनका एक तेलुगु पिक्चर राजन्ना, which was judged as the best Telugu picture and got Nandi Award। 25 फिल्मों के पटकथा लेखक है। आजकल जो पॉपुलर पिक्चर है बाहुबली और बजरंगी भाईजान, इन दो पिक्चरों के स्क्रीन प्ले को फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। हम उनका स्वागत करते हैं। Ladies and gentlemen, as we commemorate the 24th Kargil Vijay Divas, let this day be a reminder of the indomitable spirit that runs through the veins of each one of us, building us together as one proud united nation. मेजर जनरल डी.के. पुरोहित, इनका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। मेजर जनरल पुरोहित is a war veteran, not only of the Kargil war, but he fought Bharat-Bangladesh war also in 1971. He got Ati Vishishta Seva Medal in 2015 by the hands of Rashtrapati Pranavji Mukherjee. Ati Vishishta Seva Medal is the highest honor for a soldier. बांग्लादेश की निर्मित हो गई। उन दिनों 1971 में जो वार हुआ था भारत पाकिस्तान का, उस वार में जो वार वेटरन्स थे, जो जवान लड़े थे, उनका सत्कार मेजर जनरल पुरोहित इनके हाथ से किया गया था। और उस समय उन्होंने बहुत ही प्रेरणादायी भाषण किया था। उसकी चर्चा टाइम्स ऑफ इंडिया पेपर ने की थी और बहुत दिनों तक वो भाषण गूंजता रहा था। ऐसे मेजर जनरल डी.के. पुरोहित हम में से अभी हमारे बीच में उपस्थित है। दैट इज, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। So esteemed guests and students, our bright students, it is an absolute honor and privilege to have seasoned legends and esteemed guests join us today on our special occasion, 24th Kargil Vijay Divas, an evening dedicated to remembering, honoring, and celebrating the bravery of Kargil war heroes. Throughout this evening today, we will be joined by distinguished guests, veterans, and family members of our fallen heroes. Together, we will pay tribute to their unyielding commitment to the nation and remember the countless sacrifices they made to protect our freedom and sovereignty. वो देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं,
वह खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो कुम्हला जाना। यह भी क्या कोई जीवन है, पैदा हो फिर मर जाना। पैदा हो तो फिर ऐसा हो, पैदा हो तो फिर ऐसा हो जैसे योगेंद्र यादव बलवान हुआ। मरना हो तो फिर ऐसे मर जो विक्रम बत्रा कुर्बान हुआ, जो विक्रम बत्रा कुर्बान हुआ। Round of applause as Honorable Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan, graces us with her presence today. Let us all please give a standing ovation. Madam Governor has just arrived. हमारे इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलसाई सुंदरराजन, आपका आगमन हुआ है। आप तालियों के गूंज से उनका स्वागत करें। A big round of applause, dear ladies and gentlemen, as we welcome Honorable Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan, gracing us with her presence today. To mark this momentous occasion, as Madam Governor has arrived, may we seek the privilege of the Honorable Governor's presence to light the ceremonial lamp as we commence the event with Sri Ganesh Vandana, followed by a performance. I would request ma'am to grace the stage. ऑनरेबल राज्यपाल गवर्नर मैडम दीप प्रज्वलन कर रहे हैं। ये जो दीप है वो जवानों के उपलक्ष्य में है, उनके श्रद्धांजलि पर है, जिन्होंने कारगिल के वॉर में अपनी जान कुर्बान कर दी थी। कारगिल का जो वॉर था वो ऑल टुगेदर वेरी डिफरेंट वॉर था। ऐसे वातावरण में वो लड़ाई लड़ी गई थी जहां कड़ाके की ठंडी होती है, extend our heartfelt thanks to Madam for gracing us with her presence today as we Sri Ganesh today's event, the second edition of Mera Conclave. I would like to invite our Ganesh Vandana group to be performed by Samudura group. Guru Brahma Guru Vishnu Guru Deva Maheshwara
गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि सर्वराजाय गन्धाय सर्वगानश्रवणप्रणयिने गाढानुरागाय ग्रन्थाय गीताय ग्रन्थार्थतत्त्वविदे गुणवते गणपतये ग्रन्थगीताय ग्रन्थगेयाय ग्रन्थान्तरात्मने गीतलीनाय गीताश्रयाय गीतवाद्यपटवे गेयचरिताय गायकवराय गन्धर्वप्रियकृते कायकाधीन विग्रहाय गङ्गाजलप्रणयवते गौरीस्तनन्दनाय गौरीहृदयनन्दनाय गौरभानुसुताय गौरी गणेश्वराय गौरीप्रणयाय गौरीप्रवणाय गौरभावाय धीमहि गोसहस्राय गोवर्धनाय गोपगोपाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि यह गीत है मराठी संत कवि एकनाथ द्वारा लिखा गया है। एक राष्ट्रीय एकात्मता की बात है। इन 16th सेंचुरी इट वाज रिटन। और उन्हें क्या पता था कि 21st सेंचुरी में वो ऐसा गाया जाएगा। एक बार तालियां हो जाने दो। Let us take a moment to acknowledge and appreciate the brilliant performance by the girl students of Sumadura Group. माननीय राज्यपाल महोदया की उपस्थिति में फिर एक बार मैं वो पंक्तियाँ दोहरा दूंगा। वो कारगिल वॉर वेटरन से लिए लिखी गया है। वो देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं। वो देश क्या है जिसमें लेते हो जन्म शहीद नहीं। वह खाक जवानी है जिसमें मर मिटने की उम्मीद नहीं। सुख पाया तो इतरा जाना, दुख पाया तो पुनः ला जाना। यह भी क्या कोई जीवन है? पैदा हो फिर मर जाना। पैदा हो तो फिर ऐसा हो जैसे योगेंद्र यादव बलवान हुआ। मरना हो तो फिर ऐसे मर जो विक्रम बत्रा कुर्बान हुआ। धन्यवाद।
मरना हो तो फिर ऐसे मर जो विक्रम बत्रा कुर्बान हुआ. All right, ladies and gentlemen, as we commemorate the 24th Kargil Vijay Divas today, let this day be a reminder of the indomitable spirit that runs through the veins of each Indian, uniting us. Namaste, everyone. In the presence of Honorable Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan Ma'am, we extend a warm welcome to everyone present at the second edition of Mera Conclave, an initiative by JK Now, which is a media arm of JKSC. It stands for Center of Ladakh and Jammu Kashmir Studies, a research organization working for over a decade across spectrum of the Union territories of Jammu Kashmir and Ladakh. Let me also take a moment to also thank our patron partners, Kapila Group, ICFI Group, Province, Arcline, and RDD Group. Ladies and gentlemen and Honorable Madam Governor, our bright students, with great honor, I'll now take the opportunity to also address the young brigade over here. Please don't let your energies down because we are just about to begin. So we'll take a moment dedicated to real heroes and unsung protectors who safeguard our flag, making supreme sacrifices for the unity, safety, and integrity of the nation. Mera Kya aims to create awareness among the youth of India. It's a tribute to all the legends who embolden and inspire us. So youth warriors, see if you're ready to unleash the power within and take inspiration from the legends sitting in front of you. I'll request my team to now play a short AV we have prepared about the motto of Mera Kya. As we flag off Mera Kya 2023, let us come together to hail through pride the blood, sweat, and lives of the ones who instill in us true value of heroism and nationalism. Mera Kya is another effort with the stories from the ground of our real heroes. Mera Kya, as an unparalleled initiative, says thank you to all the brave hearts on behalf of a grateful nation. आप अगर अपने देश के लिए कुर्बान होने वाले हीरोज का सम्मान नहीं करते तो ये देश आगे नहीं बढ़ सकता. अगर हम मरने के लिए तैयार हो गए तो हम जीना भी सीख जाएंगे. Thank you. Fantastic. Let's give a big round of applause for this gentleman. In its first, Mera Kya 2019 celebrated the noble sacrifice and service of the soldiers with the youth of the nation in Hyderabad. जो अपनी मिट्टी का नहीं, वो किसी का नहीं. ये मत सोचे कि महिला कमजोर है, महिला कमजोर नहीं है. The martyr's blood has not gone in vain. It has served it well. Moving on, in honor of our forces, we are now marching ahead. The message has gone loud and clear, not only within India but even within Pakistan. Join the movement to recognize the exemplary duty and know the dutiful sons of the soil. Jai Hind, Jai Bharat. In the summer of 1999, our nation faced one of its most challenging tests. A test that saw our armed forces courageously defending our borders against all odds. In the treacherous terrains of Kargil, our soldiers exhibited unparalleled bravery,
selflessness, and determination, standing tall in the face of adversity. On the occasion of 24th Kargil Vijay Diwas today, we gather not only to remember the sacrifices they made, but also to draw inspiration from their unparalleled bravery. As we delve into the heart of today's event, ladies and gentlemen, let us keep in mind that the spirit of our Kargil war heroes lives on. Not only in the history books, but also in the hearts of every Indian, every youth sitting down here who cherishes the ideals of patriotism and unity. Let us take pride in watching this AV the team has prepared while we pay tribute to our nation's brave hearts. All right. Today's guest of honor, Madam Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan needs no introduction. But I would still request my team to play a AV file so that we can delve into the incredible journey of Madam Governor. Dr. Tamilisai Soundararajan ma'am. बहनों और भाइयों, हम सब खुशनसीब है कि तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन हमारे बीच में प्रमुख अतिथि के रूप में उपस्थित है। उनकी मौजूदगी हमारे लिए गर्व का विषय है। मैं राज्यपाल महोदय को डॉक्टर सुंदरराजन का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। Special good evening to each and everyone. First of all, from my bottom of my heart, I pay homage
to the 527 Indian soldiers who were killed in action, and my respects to 1,363 Jawans who were injured. So, my respects to them. Shri Vijayendra Prasad, MP Rajya Sabha, film writer, director, Major General retired D.K. Prohit, Shri Sandeep Chowdhury, IPS, Jammu Kashmir Police, Professor Tirupati Rao, ex-VC of Osmania University, Veer Naris, serving the heroes, serving the retired heroes who are serving the country still, and other distinguished ladies and gentlemen. Really, I am speechless when I saw the AV about our soldiers. And I am really pleased when the organization Jammu Kashmir Now and Center of Ladakh, Jammu and Kashmir Studies for organizing this thoughtfully titled event, Mere Kya? What about me? And it is really, when we learn about the Kargil soldiers, warriors, and particularly today morning, I paid homage to all our Kargil warriors in the Union Territory of Puducherry. And when an invitation was extended to me to attend this program, even though my schedule was very tight today, and there was no any direct flight from Puducherry to Hyderabad, which was suspended for the last 1 month. In spite of my commitment, I decided to attend this program because you are serving the nation and you are going to highlight the bravery to the youngsters, and it is my duty to attend this program. So because of that, I came to Chennai after traveling 3 hours. It was heavily raining in Chennai and I reached Hyderabad. And particularly Hyderabad is very proud to celebrate this program because than any other state, Hyderabad know the pain of the soldiers. And because of the army and because of the Operation Polo, we were able to celebrate the independence. So Hyderabad is the epicenter of nationalism, patriotism, and it is our duty to convey the message of bold and blood of our soldiers to the youngsters. I always feel the youngsters are not aware about our commitment, the sacrifice of our soldiers, and even as our Honorable Prime Minister says, during the independence, the 75th independence, the Azadi Ka Amrit Mahotsav, we have to know about all the unsung heroes. Because the youngsters of this century, the present period, they know about the film actors, they know about the cricketers, but they don't know about the soldiers. So it is our duty to convey the message, the bold message of our soldiers. And when they learn about that only, I always think of Subhash Chandra Bose. During the freedom struggle, Subhash Chandra Bose goes to other countries and collect the soldiers to fight for the independence. So when our border, he collected the soldiers from Burma, Malaysia, Singapore, and other countries. They were marching towards India. So when the border came, when they visualized the border of our country, when they reached the border of our country, he stopped the other soldiers from entering our country and he told, first 10 soldiers who should enter my country,
should be Indians, he told. The soldiers from other countries who wanted to support Subhash Chandra Bose to attain freedom, they asked, we are marching with you for the freedom of your country. But immediately when you reach the border of your country, you are telling that the first 10 who cross this border should be Indians. Subhash Chandra Bose said, we are ruled by the British. When we cross the border, the British soldiers won't keep quiet. They will shoot. The bullets will pierce the chest of the soldiers, and the blood will be spilled on the land, sand. The first blood spilled on the land should be Indian blood. So only we are telling the first to cross the border should be Indians. That spirit should be conveyed to the youngsters, particularly Kargil war. We learned about war. We knew about war. But this Kargil war, we saw the bravery during our lifetime. Whether youngsters or middle-aged person, they would have visualized. As a middle-aged person, I visualized it. And I really, from a freedom fighters family, I was crying for the soldiers. One of the soldiers said, we will come back. We will come back only after hoisting the flag. After hoisting the flag, we will come back alive or wrapped. At least definitely we will come back. But after victory, we will come back. Either alive or in a wrapped position. Who will say this? This should be conveyed to our youngsters. This should be conveyed to our youngsters. And I am really very pleased when this organization is taking this message to the youngsters. Because I always feel the youngsters of this period, this situation, the present situation, they are not aware of the sacrifice of our soldiers. And I always say one example. One of the child from a crawled, infant, it's a child, 1-year child. It crawled and took the neem fruit, which was spread over the veranda, and said, it is so sweet. Which house child? In this child's cupboard, the jackfruit, honeyed jackfruit is there, is present there. And the sweetest mango fruit is there. And the sweetest banana is there. But the child is telling the neem fruit is sweet. Why? The elders of the family did not provide that banana to the child, sweetest banana to the child. They did not provide the sweetest mango to the child. They did not provide the sweetest jackfruit to the child, because that is the history of our country. So if we are not providing the sweetness of our country, the child is telling the neem fruit is sweet, which is 85% bitter. The mistake is who? It's our mistake. We have to highlight what all the good things in our country, what all the brave things occurred in our country. And Kargil soldiers, they gave their life, but did not give even an inch of my country to the other country, to the Pakistan. They shed blood, but not even a centimeter of my country to the other country, Pakistan. So, when I saw the AV, this AV should be projected in each and every school, in each and every college, in each and every social place, so that the youngsters know about that. I was in a lighter sense, I was reading in the net. One of the teacher showed the map to a youngster and told,
Where is America? He pointed out. And where is Russia? He pointed out. And where is India? He told, no, I won't point it out. Then he told, what is your country or not point it out? You only showed, sir. You only told, sir. We should not show our country to others. So we should not reveal our country to others. We should not reveal the secret of our country to others. So only I am not showing India in the map. This is the understanding of some of our youngsters. I am not blaming them. Their focus is different. Their focus is entirely different. So we have to salute the soldiers. We have to convey, even the textbooks should have then other histories. Let it have other histories. But they should know what is Veer Chakra and what are the sacrifices of soldiers and how they are in the area like Kargil, Siachen, where it is much colder. This child is crying for AC. The child is crying for sweat. But how our soldiers are shedding their blood in the borders, it should be conveyed to the youngsters. So I really appreciate the organizers and for this exemplary work of conveying what about me. So this is a very big question. Unless we change, unless the individual changes, they cannot bring out change in the country. One person during the deathbed, he told, I wanted to change the world. I was unable to change. I wanted to change my country. I was unable to bring out any change. I wanted to change my state. I was unable to bring out any change in my state. I wanted to bring out some changes in my city. I was unable to change my city. I wanted to change my gram. I was unable to change my village. Then I wanted at least to change my family. I was unable to change. Then only I found out if I would have changed, my family would have changed, and my family would have changed, the village would have changed, the village would have changed, then the city would have changed. If the city changed, the state would have been changed. If the state changed, the country would have changed. And if the country changed, the whole world would have changed. So the beginning should be with me, from me. So I am really very much pleased when you had the discussion, convention on Mera Kya. That is what about me. Let us all introspect how we are respecting our soldiers, how we are respecting our ex-servicemen, and how we are saluting their boldness. Somebody planted some tree, we are sitting in the shade. So somebody fought for our country, we are bold enough to walk in the country. The great Kavi Bharatiyar of Tamil Nadu said, அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே உச்சி மீது வானிடிந்து வீழுகின்ற போதிலும் அச்சமில்லை அச்சமில்லை அச்சம் என்பதில்லையே, which means I am fearless. I won't fear. Even in the sky and cloud fall on my head, I am fearless for my country. I am fearless. I am completing my words. With that, please respect our soldiers, and I appreciate the organization for carrying out such an exemplary work. Salute the soldiers. Thank you so much. And I share my Kargil Divas to each and everyone. Thank you so much. May I take this opportunity to express gratitude and thank ma'am on behalf of our entire audience. While I request her presence to stay here, we are going to invite our Veer Naris. वीर नारी का हम सत्कार करेंगे। मैडम ने अभी बहुत अनमोल शब्द हमें प्रदान किए हैं, इसलिए उनके धन्यवाद है। जो वीर नारियों का हम सत्कार कर रहे हैं, उनके पतियों ने, उनके जीवन साथी ने अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दिया है। उनका सत्कार करना हमारा कर्तव्य है। I'd like to request all Veer Naris present amongst us today to grace the stage one by one as we play the AVs. I would request my team to play the AVs.
టైంలో మ్యారేజ్ అయ్యింది మాది. యాక్చువల్గా 1999లో మే 2న మా మ్యారేజ్ అయింది. తను జూన్ 22 అదే ఇయర్ జూన్ 22న లీవ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయారు. అప్పుడు అక్కడ తను ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ వార్ స్టార్ట్ అయింది. యాక్చువల్గా తను అక్కడ 7th of July తను అలా అయిపోయింది అక్కడ. అదే రోజు మాకు 7th of July మాకు లెటర్ వచ్చింది. తను అక్కడ తను జరిగిపోయి అక్కడ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన టైంలోనే మాకు లెటర్ రీచ్ అయింది. తన లెటర్ మాకు రీచ్ అయింది. Please join us to welcome on stage Srimati Divya M.R. as Madam Governor felicitates her, wife of Lance Nayak Ramchandra. I would request everyone in the audience to please do a standing ovation for our I would request Srimati Anuradha Pilla, wife of Sergeant Ravi Prasad, VSM. Can I please have my team to play the AV? తర్వాత జీ న్యూస్లో మొత్తం డైడ్ షార్ట్ అని చెప్పేసి వచ్చింది. అప్పుడు కన్ఫర్మ్. The 28th of May 1999, during an air operation in Kargil War, Sergeant P.V.N.R. Prasad's Mi-17 helicopter was hitting the enemy hard. When the helicopter was hit by a Stinger missile, crashing down with his valiant crew. చాలా బాధపడద్దని చెప్తే నేను కూడా చాలా గర్వంగానే ఫీల్ అవుతున్నానండి. ఎందుకంటే నా పర్సనల్గా భర్త అనే దానికన్నా దేశం కోసం ఆయన త్యాగం చేసేది చాలా గొప్పగా అనిపించింది. అందుకని నేను ఆ రోజు కూడా అంత బాధ అనిపించలేదు. ఎందుకంటే చాలా గర్వంతోనే ఇప్పటికీ స్టిల్ ఆ గర్వంతోనే, ఎందుకంటే అంతమందికి ఆయన త్యాగం చేసినప్పుడు నా ఒక్కదాని కోసం ఎందుకు అనే ఆ త్యాగంతోనే ఆ ధైర్యంతోనే నేను మా ఫ్యామిలీ కానీ మా పాప కానీ నేను కానీ చాలా ధైర్యంగా బతుకుతున్నాం, గర్వంగా బతుకుతున్నాం. ఎందుకంటే నా భర్త ఒక త్యాగం చేశారు అనే లోపల ఫీలింగ్ ఉంటే ఆ ఫీలింగే ఒక ధైర్యం మాకు. ఆ ధైర్యంతోనే మేము చాలా హ్యాపీగా గర్వకారణంగా బతుకుతున్నాం. Join us in honoring this gallant air warrior who exemplified the highest order of courage in service to our country. Srimati Anuradha Pilla, wife of Sergeant Ravi Prasad, VSM. कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला हर एक था भारतवासी. I'd like to request Srimati Shivnila Pasari, our next Veer Nari, wife of Rifleman T. Srinivasalu, as we pay tribute to the heroes of the nation.
రాగానే మాకు ఇంకా అసలు మేము చాలా బాధగా మాకు ఈ రోజుల్లో నేను చూసుకుంటుంటే మాకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది. ఏంటంటే ఒక్కటే బాబు మొహం చూసుకోలేకపోయింది కదా ఈ రోజు నుంచి. ఇప్పటికి ఎంత ఉన్న బాలుడు తనే సార్ బాబు ఆ రోజు అది కూడా నడుచుకొని నేను ఏదో పోరాడు ఇప్పటికి ఆయన ఎట్లా పోరాడని నేను ఉడకంగా మా బాబును నడుచుకున్నట్లే సాధించాలి మనం శ్రీనివాసులు ప్రేయర్ నిలబెట్టాలని నాకు ఇప్పటికే ఉడకంగా. Welcome on stage Srimati Shivnila Pasari, wife of rifleman T. Srinivasulu. इस मुल्क के आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. The presence of our next Veer Nari, Srimati Phula Devi, wife of Havaldar Suresh Ganpati Chavan. इनके जीवन साथी का माना था, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं. सर हिमालय का हमने न झुकने दिया. Gracing the stage next, saluting the battle-wounded soldier Havaldar S. Adi Shankar Narayan Rao. Let's applaud, ladies and gentlemen, as we welcome on stage the battle-wounded soldier Havaldar S. Adi Shankar Narayan Rao. Bharat Mata ki. All right, ladies and gentlemen, please join me in welcoming Rajya Sabha MP, the master storyteller Vijendra Prasad ji, as he graces the stage with Honorable Ma'am, the Governor of Telangana. Let's give a big round of applause, ladies and gentlemen. We have two legends on the stage. Honorable Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundararajan Ma'am and Vijendra Prasad. We have a presentation for ma'am. Thank you so much.
We have a presentation for Governor Ma'am, presented by Ms. Pooja. I'd like to invite her on stage. A presentation from KMIT. Let's have a group picture of the Legends presenter on the stage. Brigadier G. Suresh, a distinguished army officer and author, to come on stage as we have the privilege of witnessing the unveiling of his remarkable book. Jai. Repeat after me, everyone. Show your energies. Bharat Mata Ki. Jai. Bharat Mata Ki. Jai. All right, now it looks like we are paying tribute to the true heroes of the nation. With great honor, I would like to thank everyone, all the esteemed guests present on the stage. But I would request ma'am to stay on the stage as we, with great honor, request presence of Brigadier G. Suresh, a distinguished army officer, author, to come on stage as we have the privilege of witnessing the unveiling of his remarkable book called Hum Rahi. Brigadier G. Suresh, Madam. everyone. Let's show our love and appreciation for the legends present amongst us today. Give them a hearty round of applause and cheer for their incredible contributions. Thank you, everyone. I'll now invite Sri Harish Gurumukhi ji for vote of thanks and deliver a thank you speech to Madam Governor, followed by a group photo of honorable guests. Honorable Governor of Telangana and Lieutenant Governor of Puducherry, Dr. Srimati Tamilisai Soundararajan. On behalf of JK Now and Center for Ladakh, Jammu and Kashmir Studies, I extend my heartfelt gratitude to you for gracing this occasion with your presence and delivering such an inspiring speech today. Your mere presence and uplifting words have left an indelible impact on all of us, and we are truly honored to have had the privilege of listening to your inspiring thoughts and innovative ideas. Before going any further, I want to take a moment to ponder. Is it mere coincidence, or is there a divine design that both the constitutional head of our country and state happen to be women, and that too highly accomplished individuals? Madam Governor, your presence and address to this august audience, which comprises of both serving as well as retired armed forces personnel, as well as Veer Naris, has, I am sure, uplifted them and given them a lot of inspiration. Your presence and uplifting words have actually left an indelible impact on all of us, and we are truly honored to have you had the privilege of listening to your inspiring thoughts. We are deeply appreciative of your dedication to fostering a sense of unity, inclusivity, and nationalism among all Indians. Your efforts will go a long way in fostering this spirit, and as India marches on into the future, into a bold future, this speech will be remembered by a lot of us, and
I'm sure they will inspire a lot many of us to, and the future generations to consider a career in the armed forces. Once again, thank you, Honorable Governor, for gracing us with your presence and sharing your wisdom. Your words have left an indelible mark on our hearts and minds, and we assure you that we will work tirelessly to uphold the values and principles you have espoused. Jai Hind. Thank you. May I please request ma'am to come on stage once more as we felicitate. Let the claps keep coming. It was truly an honor to have the privilege of ma'am's presence today amongst us. Before ma'am leaves, let us just have our Army Band play National Anthem. I'd like to request Army Band and my team to coordinate so that the tone plays to the National Anthem. One day, Bharat Mata ki. Wow, the energies are high, ma'am. Thank you so much for taking out time from your precious schedule, ma'am. Thank you for gracing the stage and gracing the occasion. Everyone, big round of applause for Honorable Governor of Telangana, Dr. Tamilisai Soundarajan. वेरी मोटिवेटिंग स्पीच हमें मिला है। गवर्नर मैडम का जो स्पीच है वो बहुत दिन तक हमें याद रहेगा। सारी दुनिया को बदलने का प्रयास करने से बदले में हम आप में अपना अपना परिवर्तन करना चाहिए। अगर हम अपने में परिवर्तन करते हैं तो दुनिया बदलती है। ये जो मैसेज हमने दिया है, आपने जो दिया है, उस मैसेज के लिए हमें बहुत बहुत शुक्रगुजार है। धन्यवाद। थैंक यू। बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड। करते भारत की रखवाली हत जिसने बुरी नजर डाली, बन जाते पल में महाकाल, तन मन इनका भारत विशाल। जिनकी रक्षा में रघुनंदन, वीरों का दिल से अभिनंदन, दिल से अभिनंदन, दिल से अभिनंदन। As we embark on this enriching second edition of Mera at KMIT Hyderabad, please join me in giving a resounding round of applause to our esteemed moderators, speakers who will grace the panel today with their engaging and enlightening discussions on the 24th Kargil Vijay Divas. As JK Now's big initiative, Mera continues the legacy of paying heartfelt tributes to the brave souls who have shaped our nation's history and are present amongst ourselves over here, inspiring the students, hundreds of students present over here in the auditorium, as well as the ones who are sitting outside but are ready to be inspired with their great services to the nation. Before we start our next session, the first session of today's event, we are just going to take 2 minutes as they're going to place the chairs over here. So please be seated, everyone. JK Now, a digital platform for news and views on Jammu, Kashmir and Ladakh. Current news. We cover stories that have potentials to affect people.
Views that shape policy and politics. Article 370 was a highly illiberal law. Path-breaking ground reporting brings out ground realities. 30 साल गुजर चुके हैं, वो त्रासदी, उसका दर्द आज भी जिंदा है, आज भी ताजा है. We resonate the unheard voices of marginalized communities. हमें आधार कार्ड दे दिया गया है कि आप इस कंट्री से हो, किस स्टेट से बिलोंग करते हो, ये हमें पता ही नहीं है. Interviews of the people that matter. World-class documentaries explore the truth and facts. सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में दूसरी फिल्म है हिंदी फिल्म जस्टिस डिलेड बट डिलीवर्ड. Mera is another effort with the stories from the ground of our real heroes. Conclave's tribute to heroes of our nation. Reaching out to the people of the world via power of social media trends. We bring glorious history of land of Kashyapa and King Lalitaditya. Brave stories of modern times. Correcting the errors of history with original facts. Fights the propaganda spread by anti-India forces. JK now, completing India. As we move forward and begin with today's first session, everyone, this is especially to the youth brigade sitting at the back of the rows. Do listen to the stories of our army veterans and seasoned legends, and let their valor ignite a fire within us to serve our nation with equal passion and dedication. Our journey as a united force has just begun. Please join me in welcoming our first moderator, Shri Virendra Singh Chauhan. Dr. Virendra Singh Chauhan is a prominent figure in journalism, academia, media, and social service. He served as Deputy Chairman and Director of Haryana Granth Academy, Head of Journalism and Mass Communication at Chaudhry Devilal University, Sirsa. He's also the Founder Director of Radio Sirsa. With decades of experience, he has been a respected journalist in North India. A big round of applause for Dr. Virendra Singh Chauhan, ladies and gentlemen. With decades of experience, he has been a respected journalist in North India. I'd request him to take the session forward and invite our first guest speaker. शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा. 1916 में एक कवि ने जो ये पंक्तियां कही थी, हमारे सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए और स्वाधीनता संग्राम में अपनी कुर्बानी देने वाले हमारे सभी बलिदानियों के प्रति ये जो कवि ने कमिटमेंट की है, मैं ये समझता हूँ कि मैं, आप, हम सब इस मेले वाली कमिटमेंट, मेरे वाली कमिटमेंट और मेले वाली कमिटमेंट को निभाने के लिए आज यहाँ उपस्थित हुए हैं. आइए स्वागत करते हैं. हमें करगिल विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हम लोग हुए हैं और करगिल विजय दिवस करगिल में जाए बिना नहीं मनाया जा सकता. आज हम मेजर जनरल DK पुरोहित जी के साथ करगिल चलेंगे. अगले 15-20 मिनट, आधा घंटा हम करगिल में रहेंगे और करगिल तक मुझे आपको ले जाने के लिए मैं स्वागत करता हूं मेजर जनरल DK पुरोहित जी का. वो मंच पर पधारें और दिल से जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें. Discover the incredible story of bravery and resilience. जब युद्ध हो रहा था, जब दुश्मन से हम टकरा रहे थे, तो आप मौके पर थे. आप वहां थे जहां न होने का कईयों के मन में मलाल हो सकता है. बहुत लोगों से मिलते हैं
तो वो कहते हैं कि मैं भी होता अगर आज़ादी से पहले तो भगत सिंह जैसा हो सकता था। हम नहीं थे, ये मलाल था, हम नहीं थे करगिल में, लेकिन आप थे। आपसे हम जानेंगे करगिल में क्या हुआ था। पधारे साहब, विराज जी। Discover the incredible story of bravery and resilience on the highest battleground of the world. Gain valuable insights into the lessons India learned from the Kargil War. Explore the possibility of reclaiming POJK. Is India ready for the challenges that lie ahead? Meet Major General D.K. Purahit, a distinguished war veteran. Join us for this momentous event as we honor our heroes and learn from their experiences. एक बार पहली पंक्ति से लेकर और आखिर तक, ऊपर तक जो बैठे हुए युवा साथी हैं, सब मिलकर जोरदार भारत माता की जय का उद्घोष कर जनरल साहब का स्वागत करेंगे। भारत माता की। हाथ भी उठने चाहिए, मुट्ठी भी भींचनी चाहिए, और यही हमारी करगिल के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारत माता की, भारत माता की। जनरल साहब, आपका स्वागत है। और जैसा मैंने कहा, हम आपके साथ करगिल जाना चाहते हैं। 24वां विजय दिवस, ऑपरेशन विजय की विजय का विजय दिवस, आप हमारे बीच में हैं। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। सीधे करगिल चलते हैं। जिस दिन आप वहां जम्मू कश्मीर के लिए निकले, जहां उससे पहले आपकी पोस्टिंग थी, उसके कितने दिन बाद करगिल शुरू हो गया, और आप एग्जैक्टली उस समय कहां थे? आपसे ये जानना है, अल्टीमेटली हमने समझना ये है कि हुआ क्या था, हुआ कैसे था। सबसे पहले मैं 1 मिनट लूंगा जय हिंद कहने के लिए। बिल्कुल। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री विजेंद्र प्रसाद जी, मेरे आर्म्ड फोर्सेस के साथी, सम सर्विंग soldiers, officers, retired fraternity, NCC के cadets, and ladies and gentlemen, आप सबको मेरा जय हिंद, and thank you to Jammu Kashmir Study Center for honoring me by inviting to यहाँ हाजिर होने के लिए मुझे न्योता देके। मैं हिंदी इंग्लिश मिला के बोलूँगा। हाँ, मिलाकर बोलें आप। हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आएगा। अब बात चलती है कि कारगिल युद्ध कब और क्यों शुरू हुआ, आपने पूछा है। जो मुख्य युद्ध हुआ वो तो 2-2.5 महीने सन 99 में हुआ, लेकिन सन 98 की गर्मियों में LOC के ऊपर दोनों तरफ से काफ़ी ज़ोरदार गोलाबारी और फायरिंग, और वो एक तरह की लड़ाई छिड़ चुकी थी। सिर्फ यही था कि हम लोग उसमें आगे कोई फिज़िकल हरकत नहीं कर रहे थे। ये बात कारगिल कस्बा या शहर अब है, टाउन है, इसके आसपास 50 किलोमीटर दाएं बाएं बटालिक उस इलाके में फैली हुई थी। जी। उसके बाद थोड़ा सा मैं यहाँ पे अपनी बटालियन का विवरण दे दूँ। मैं 9 महार को कमांड कर रहा था, कमांडिंग ऑफिसर था, और उस फायरिंग की लड़ाई सन 98 की गर्मियों में करीब सितंबर अक्टूबर होते होते सर्दियों की वजह से शांत हो गई, और फिर मेरी बटालियन वहाँ से मूव हुई इलाका बटालिक से, और हम लोग
अपनी आगे की तैयारी ऑपरेशन मेघदूत के लिए नीमू नाम की एक जगह पे आए और वहाँ से फिर मार्च 99 में नीमू से खारदुंगला पार करके आप में से जो इंटरेस्टेड होंगे इन एक्सपीडिशंस और एडवेंचर स्पोर्ट्स, हम लोग खारदुंगला पार करके बेस कैंप सियाचिन ग्लेशियर के पहुँचे। आप सियाचिन गए, आपकी जो 9 महार को सियाचिन जाने के लिए कहा गया, उस समय तक आपको शायद बिल्कुल कल्पना नहीं रही होगी कि युद्ध जैसी सिचुएशन आएगी, घुसपैठ का सामना करना पड़ेगा। आपकी बात ठीक है, हम युद्ध के लिए गए थे तैयार होके, पर सियाचिन में युद्ध के लिए गए थे और हम वहाँ मैं पहली मार्च को पहुँचा था, बटालियन आ गई मार्च के आखिर तक। हम अप्रैल के महीने में ट्रेनिंग किए, पूरी तैयारी किए और मई में हमारा सेंट्रल ग्लेशियर में इंडक्शन शुरू हो गया था जब ये हमको खबर लगी कि पाकिस्तान ने कुछ घुसपैठ की है कारगिल के इलाके में भी, और हमारा इलाका जो आज सब सेक्टर हनीफ के नाम से जाना जाता है जी, तब उसको तुर्तुक सेक्टर कहते थे, उसमें भी पाकिस्तान की कई पोस्टें बन चुकी थी, वो लोग अंदर चले आए थे। ये मई के मध्य में जो है हम लोगों को मालूम पड़ गया था। दोस्तों, हुआ यूं था कि पाकिस्तान चोरी छिपे मौसम का फायदा उठाकर, या यूं कहिए कि हमारी भलमानसाहत का फायदा उठाकर चुपचाप करगिल की ऊंची पहाड़ियों पर, चोटियों पर आ बैठा था। और जब आप अपनी 9 महार के साथ वहां पहुंचते हैं, तब तक ये बात सार्वजनिक हुई कि वो तो ऊपर आकर बैठ गए हैं। इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको क्या कहा गया, आपको क्या आदेश मिले, और आप लोगों के सामने चैलेंज क्या था एक्चुअल में? हमारे पास चैलेंज ये था कि हमने तैयारी सियाचिन ग्लेशियर के लिए की थी और ये एक बिल्कुल ही नया फ्रंट था जहाँ के लिए एक लड़ाई के लिए सबसे बड़ी चैलेंज पहले लॉजिस्टिक्स तैयार करना है जी। नेपोलियन का फेमस कोटेशन है, आर्मी मार्चेस ऑन इट्स बेली। तो जहाँ उन्होंने आके पोजीशन ले ली थी उसके खिलाफ मिलिट्री एक्शंस के लिए देयर वर नो लॉजिस्टिक्स प्रिपरेशन येट। आई वाज ऑर्डर्ड टू फर्स्ट मूव one company and block certain positions, which our brave boys did by 3rd week of May, and then one more company, heavier weapons, mortars, etc. were inducted. तो आपकी जानकारी के लिए कि एक बटालियन में करीब 930-920 लोग होते हैं, मेरी रेजिमेंट ने मुझे 1020 आदमी भर रखे थे और उसमें से आधे जो है उस फ्रंट पे लग गए। और फिर मैंने अपने साथी सेकंड इन कमांड लेफ्टिनेंट कर्नल मनोज ओक को उस मोर्चे को देखने के लिए नियुक्त किया और आगे की लड़ाई हमारी वहाँ पे पहले उनको रोकने की कार्रवाई की, जिसमें पहले जहाँ जहाँ उन्होंने पोजीशन ली थी उनके सामने कुछ एक टेकरियों पे हमने पोस्ट बनाई और कई हालात में हमने उनके रसद के रास्तों को काटा, फिजिकली पहाड़ की माउंटेनिंग। और ये मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑफ ऑल्टीट्यूड्स 15,000, 16,000, 17,000 एंड इवन 18,000 फीट। ये माउंटेनियरिंग का खेल है। तो सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि दुनिया की किसी आर्मी ने ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी थी। 15,000, 16,000, 17,000 फीट की ऊंचाई पर, और किसी को लड़ने का अभ्यास नहीं था और चैलेंज आ गया। उस समय आप कर्नल पुरोहित थे। हाँ, मैं कर्नल था। इसका कोई प्रेसिडेंस नहीं था और दुनिया में नहीं, भारत में नहीं, दुनिया में कहीं नहीं, भारत में भी नहीं था जी। जो सन 62 में लड़ाई हुई थी वो इतनी ऊंचाइयों पे नहीं हुई थी। और पहले हमने पोजीशन ली और उनके रसद के रास्तों को काटने में मुझे याद है मेरा एक बहुत बहादुर अफसर शहीद हुआ, मेजर मनोज तलवार। वो 18,500 की फीट के ऊपर एक पोस्ट बनाने की कोशिश में रास्ता लगा रहा था, ढूंढ रहा था ऊपर
माउंटेनियर की तरह चढ़ रहा था। और इस तरह से जून के पहले हफ्ते तक हमने उनकी आगे की किसी प्रोग्रेस को रोक दिया था और कई पोस्टें उनकी रसद न मिलने की वजह से खुद ब खुद खाली हो गई थी। आगे बढ़ने से पहले आपने कहा सूबेदार मनोज, मेजर मनोज तलवार। मेजर मनोज तलवार, मेजर मनोज तलवार बिल्कुल शुरुआती दौर में उनकी कुर्बानी हो जाती है। तो एक बार आइए मेजर मनोज तलवार को हृदय से स्मरण करते हैं, दिल से याद करते हैं और जोरदार करतल ध्वनि से उनकी कुर्बानी के लिए उनको नमन करते हैं, उनके परिवार को नमन करते हैं। चैलेंज ये था, उनकी एक टॉप थी, उनकी एक चोटी थी जहां रेशमा आपने बताया था मुझे, मेरी आपसे चर्चा हुई, वो आगे आएगा। तो ये उसके पश्चिम में था जी, उसके पश्चिम के इलाके में। वहाँ और भी यूनिट्स के लोग दूसरी तरफ और पश्चिम में। ये इलाका तुर्तुक हमारा आखिरी गांव है जहाँ सड़क जाती है। उसके बाद से लेके कारगिल की तरफ का ऊंचा बर्फीला पहाड़ी इलाका, इसको जहाँ चोरबाटला नाम अखबारों में बाद में आया जी, वो पूरा इलाका बर्फीला ऊंची ऊंची पहाड़ियों का, और वहाँ तैनाती नहीं थी पहले। और ये लड़ाई उस सेक्टर की है जहाँ पहले कभी फौज की तैनाती नहीं हुई थी जी। तो आगे फिर हमने अपनी पोस्टें बनाई। तब तक कुछ सड़क वगैरह बननी शुरू हो गई थी, हमारी तोपें आ गई थी, गोलाबारी शुरू हो गई थी। और जून के आखिर तक धीरे धीरे हमने, मेरी बटालियन ने अपनी जिम्मेवारी के इलाके में, और हमारी बगल में राजरिफ बटालियन थी, उन्होंने अपनी जिम्मेवारी के इलाके में, एक और स्पेशल ट्रूप्स होते हैं विकास, उन्होंने, हम लोगों ने मिल के अपने इलाके में से लगभग पाकिस्तान की सभी पोस्टों को आपने हटा जिक्र दिया। किया, आपने जिक्र किया कि बहुत जटिल सिचुएशन थी, बहुत कठिनतम परिस्थितियों में हम लड़ रहे थे। दुश्मन कहाँ बैठा था, दुश्मन के लिए चीज़ें हमारी तुलना में किस तरह फेवरेबल थी, थोड़ा सा उसकी एक तस्वीर खींचेंगे तो नई पीढ़ी को समझ में आएगा कि लड़ कैसे रहे थे, किस हालात में लड़ रहे थे। ये बहुत ज़रूरी बात है। उनके लिए वो पहले से तैयारी, पिछले साल से तैयारी कर रहे थे, तो वो अपनी तैयारी करके आके मार्च के बीच या उसके बाद आके बैठ गए थे और पोजीशन बनाई थी। उन्होंने संगड़ बनाए थे, जो पत्थर के मोर्चे होते हैं, बंकर बना लिए थे। और उनके लिए उनका जो स्कार्दू की तरफ से जो ट्रैक आते थे वो आसान थे, वो उतने मुश्किल नहीं थे जितने हमारी तरफ तीखी पहाड़ियाँ थी, एकदम 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री के क्लाइम के ऊपर। और जैसा मैंने कहा कि उन ऊंचाइयों पे 10 कदम चलने के बाद सांस लेनी पड़ती है, तो उसके अंदर आप लोग कल्पना कर सकते हैं कि जवान कैसे ऊपर जाता है, कैसे मोर्चा बनाता है, कैसे अपना हथियार एम्युनिशन पहले ले जाता है, कैसे उसको खाना मिलेगा, और भी बहुत सी बातें हैं। जैसे मेरी फ़िक्र ये होती थी कि रसद कैसे पहुंचेगी इनके पास, किसी को चोट लगेगी, कोई घायल होगा, तो उसको कैसे हम वापस लाएंगे। इंडियन आर्मी हमेशा अपने घायलों और अपने शहीदों का देखभाल करती है, हम कुर्बानियाँ देते हैं उसके लिए। जनरल साहब ने कहा कि दुश्मन ऊपर था, चोटियाँ, और जहाँ से चढ़कर उसे उखाड़ फेंकना था, वो चढ़ाई, उसका एंगल, ये नई पीढ़ी को ध्यान कर समझना पड़ेगा। सुनने के बहुत उसको सुनकर आज भी कौतूहल सा होता है। 70 डिग्री, 80 डिग्री, और जनरल साहब ये भी कह गए कि 90 डिग्री की भी चढ़ाई थी। 90 डिग्री की चढ़ाई पर चढ़कर ऊपर आर्म्स के साथ, एम्युनिशन के साथ फायरिंग कर रहे दुश्मन को उखाड़ के फेंकना था। आपके लोगों के पास कौन से पॉइंट को जीतना, हमने बहुत सारे नाम तो बड़े पॉपुलर हैं, तोलोलिंग, टाइगर हिल, कहीं कोई फिल्मों में भी आ गया, लेकिन जहां आप थे, जहां आप और आपके सैनिक थे, जिस हिल को कैप्चर करने की जिम्मेदारी आपकी लगी थी,
उसकी भी दास्तान थोड़ी सी आप हमें सुनाएंगे तो। मैं एक ऑपरेशन मेरी बटालियन का थोड़ा सा विस्तार में, लिटिल मोर इन डिटेल आई विल एक्सप्लेन, दैट वाज कैप्चर ऑफ पॉइंट 5220। ये 14-15 जुलाई की रात को इट वाज एग्जीक्यूटेड। 5220 आप अपने आप ऊंचाई समझ सकते हैं, और 5220 मीन्स 5220 मीटर्स, दैट इज ऑल्टीट्यूड। और वहाँ पे प्रॉपर एस्टेब्लिश्ड एनिमी पोस्ट बनी हुई थी और वो टिकी हुई थी, और बीच बीच में हमारे ऊपर हमारी जो पेट्रोलिंग की पार्टी जाती थी या हमारे रसद के रास्ते थे, दे वर फायरिंग एट देम, सो इट वाज इंडिस्पेंसिबल टू कैप्चर देम। तो देयरफॉर अटैक वाज प्लान्ड, और हमारे 3 सब कॉलम बनाए गए, 3 कॉलम। एक कॉलम was being led by Captain Rawat, another one was by Subedar Satnam, और तीसरे कॉलम और चौथे कॉलम को एक रिज़र्व रखा गया था। एक फायर बेस बना जिसके अंदर इंचार्ज मेजर संग्राम दलवी थे, वो भी मेरी रेजिमेंट के हैं। और 14 जुलाई की सुबह को, उससे पहले 24 घंटा 48 घंटा उस 5220 के ऊपर काफ़ी आर्टिलरी और मोटर का बम्बार्डमेंट किया गया। इट वाज bombarded very heavily, what is known as pre-attack bombardment। और इसकी इम्पोर्टेंस ये थी कि 5220 पाकिस्तान की एक बहुत इम्पोर्टेंट पोस्ट रेशमा से जुड़ा हुआ था, और हमारा इरादा रेशमा के ऊपर ख़तरा पैदा करना था, क्योंकि वहीं से पाकिस्तान की सारी ये इन्फिल्ट्रेशन और हमारे इलाके में पोस्ट बनाने की कार्रवाइयाँ कंट्रोल की जा रही थी। रेशमा 5220 से ऊंचा है? नहीं, उसके बराबर है, पर उसके पीछे जी 5-10 मीटर ऊपर नीचे होगा। पर वो सीज़ फायर पुराने दिनों से पाकिस्तान वाले कश्मीर के हिस्से में। तो फिर ये अटैक लॉन्च हुआ। 3 कॉलम हमारे जो है, एक साउथ ईस्ट से, एक साउथ से और एक ईस्ट से। तो सबसे पहले साउथ ईस्ट वाले कॉलम पे दुश्मन का हैवी फायर आया। उन्होंने उनका एक बंकर भी रॉकेट फायर करके तोड़ा, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी इफ़ेक्टिव फायर वाज बीइंग ब्रॉट ऑन देम। मीनवाइल सदर्न कॉलम प्रोग्रेस्ड वेल, और उसने जाके अपनी पोजीशन रात को 2 बजे तक पोस्ट के बिल्कुल पास तक पहुंच ली थी, पकड़ ली थी। और कैप्टन रावत इस कॉलम के साथ थे, और दूसरी तरफ ईस्ट की तरफ से एक कॉलम में सूबेदार सतनाम सिंह थे। ये दोनों ने सुबह करीब 3-3:15 बजे जो है दुश्मन के संगड़ और बंकर जो दिख रहे थे उनके ऊपर नज़दीक से रॉकेट लॉन्चर फायर किए। ये पूरी कार्रवाई आपको समझ लेनी चाहिए कि गोले गिर रहे थे, पाकिस्तान की आर्टिलरी के गोले गिर रहे थे, मोटर के गोले गिर रहे थे, हमारे अपने गोले पाकिस्तान की पोस्ट के ऊपर गिर रहे थे। हमारे आदमी बोझा हथियार वजन लेके पहाड़ पे चढ़ रहे थे, सांस फूल रही थी, लेकिन कदम रुक नहीं रहे थे। तो ये 2 रॉकेट लॉन्चर ने फायर करके उनके 2 संगड़ों को बर्बाद किया। उसके बाद जो साउथ वाला कॉलम था उन्होंने पहले अटैक किया। उनके अटैक के बाद उनके 2 और बंकर कैप्चर हुए, और फिर साउथ वाला जो ईस्ट वाला जो दूसरा कॉलम था उन्होंने अपना अटैक आगे बढ़ाया। तो सुबह 4-4:15 बजे तक वो लोग पोस्ट अपनी छोड़कर और अपने घायलों को उठाकर भाग गए। जनरल साहब, ये सारा सदन आपसे ये जानना समझना चाहेगा, आज की इस बातचीत को समाप्ति की तरफ ले जाते कि हमारे पास शायद साधन भी कम थे, हम संख्या में भी कम थे, दुश्मन बहुत ऊंचे खड़ा था। इस सब के बावजूद वो कौन से 1-2 फैक्टर्स थे कि हम जीते? वैसे तो हमने, भारत की सेना ने पाकिस्तान को हर युद्ध में पराजित किया है अभी,
लेकिन इतनी जटिल परिस्थितियों में कारगिल विजय या आज का दिन जो हम मना रहे हैं, ये संभव हुआ। अगर इसके लिए उत्तरदायी कोई एक दो फैक्टर्स आपको बताने हो तो क्या कहेंगे? मैं 4 बातें बताऊंगा आपको। 2 + 2 4। हाँ, स्वागत। सबसे पहले बात कि हमारे बहादुर जवानों का अदम्य शौर्य, करेज बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड डिटर्मिनेशन, ये पहला फैक्टर था। दूसरा था हमारे जूनियर लीडर, जो मेरे हवलदार थे, सूबेदार, कैप्टन और मेजर। ये जूनियर लीडरशिप बहुत ज़ोरदार और इफ़ेक्टिव थी। ये आगे से लीड कर रहे थे। मैंने एक सूबेदार सतनाम का नाम लिया, एक हवलदार महपाल ने आगे बढ़कर दुश्मनों के ऊपर जो है वो मशीन गन हाथ में लेके दौड़ता वो पोस्ट के ऊपर गया। एक और किसी और ऑपरेशन में मेरे सूबेदार सुखराम ने जो है बहुत अच्छा काम किया। तो ऐसे हमारे पास जो है जोश, साहस और उत्साह की कमी नहीं थी और लीडरशिप की कमी नहीं थी। दूसरा, हमारी आर्टिलरी और एयरफोर्स ने बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट दिया हम लोगों को। एयरफोर्स के लिए मैं ख़ास आप लोगों को कहूँगा कि एक बार तालियां बजाएं। They did a remarkable job of जुगाड़, इम्प्रोवाइजेशन, क्योंकि उन हाई एल्टीट्यूड के ऊपर पहली चीज़ की कोई भी एमिनेशन दुनिया का डिज़ाइन ही नहीं हुआ है फॉर दोज रेरिफाइड एटमॉस्फेयर, और उस पर भी प्रिसीजन बॉम्बिंग एयरफोर्स के द्वारा और आर्टिलरी के द्वारा करना ये कोई आसान खेल नहीं था। जुगाड़ शब्द सुना है, हमारे यहाँ हरियाणा में, उत्तर भारत में तो खूब चलता है। इम्प्रोवाइजेशन, हालात को देखते हुए जो अवेलेबल है उसमें से जादू करना, मुझे लगता है इसी को जुगाड़ कहते हैं। और भारत के अलग अलग हिस्सों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। और एक चौथा पॉइंट जो आखिरी है जी, कि पाकिस्तान ने इस पूरी लड़ाई को गुप्त रखा था। There was nothing in Pakistani media. People of Pakistan were not aware what their army and their government were doing. Probably government of Pakistan was also half aware or not understanding what was happening. लेकिन हमारे देश के अंदर ज़बरदस्त वीरता और उत्साह का बहाव था। हम लोगों को रोज़ की हज़ारों चिट्ठियाँ देश के कोने कोने से आती थीं, स्कूलों से, कॉलेजों से, हाउसवाइफ, अदर्स फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, और वो चिट्ठियाँ हमको हज़ारों की तादाद में पोस्टल डिपार्टमेंट हमारा आर्मी का दे देता था, और मैं उनको जाके अपने जवानों के बीच में बांट देता था। हमारी अपनी चिट्ठियाँ तो आने में बहुत उन दिनों 15-20 दिन लगते थे। तब तक ये चिट्ठियाँ पढ़ोगे, तुम्हारे देशवासी तुम्हारे बारे में कितना गर्व कर रहे हैं और कितनी हिम्मत है। तो ये जो पूरे देश की भावना थी इसमें, वो हम लोगों को वहाँ आगे महसूस हो रही थी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ढेर सारी जानकारियाँ, जो करगिल का फील देने वाली कुछ जानकारियाँ आपने हमारे सामने रखी। इस चर्चा को, बातचीत को समाप्त करते हुए, मैं कर्नल पुरोहित थे, आज सेवानिवृत्त जनरल पुरोहित हैं। आपने जो कहा कि देश की भावनाएं भी साथ खड़ी थी, कैसे खड़ी थी? जैसे उस दिन खड़ी थी आज भी खड़ी हैं। आज द्रास में जब करगिल के शहीदों को नमन करने के लिए देश के रक्षा मंत्री गए, तो एक वीर नारी से मीडिया के लोगों ने पूछा, आज की घटना है, आप कैसा महसूस करती हैं? आंसू आना शहीद का स्मरण करके परिवार वालों के लिए सामान्य बात है, परंतु एक वीर नारी ने यह कहा कि इस देश में लोग व्रत रखते हैं, कोई अपने अपने रिलीजन के हिसाब से व्रत रखता है, कोई दिवाली मनाता है, कोई होली मनाता है, कोई और त्योहार मनाता है। हमारे लिए अपने शहीदों को याद करना ये मौर्न करने का दिन नहीं है, ये दुखी होने का दिन नहीं है। ये वीर नारी कह रही है, जिसने अपना पति गंवाया सरहद पर करगिल में। हमारे लिए ये दिन
ये विजय दिवस दिवाली भी है, होली भी है, ये हमारे लिए त्योहार है। ये भावना जनरल साहब हम सब के मन में है और आज के इस कार्यक्रम में से मैं समझता हूँ नई पीढ़ी यही प्रेरणा लेकर के जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे साथ आए और जनरल साहब के अभिनंदन का आखिरी 30 सेकंड लूँगा। मैं आपको 1 मिनट भी, आपके लिए सारे मिनट खा लिए हैं। इस मौके पर मैं इस लड़ाई के अंदर जो मेरे 2 अफसर 8 जवान शहीद हुए जी और करीब कुल 33 जवान घायल हुए, उनको मैं याद करूंगा। जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि जरूर देना चाहूँगा। और लड़ाई के अंदर बहुत से किस्से, बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन अभी सब समय नहीं है, फिर कभी आपको उसके बारे में तो आइए आपके साथ लड़े, आपके साथ लड़ते हुए आपके नेतृत्व में जिन 2 लोगों ने प्राणों की आहुति दी, आप उनको याद करना चाहते हैं, हम सब भी उनको याद करना चाहते हैं। एक बार खड़े होकर हम सब उनके लिए करतल ध्वनि करेंगे, उन्हें स्मरण करेंगे और उन्हें नमन करेंगे। जोरदार करतल ध्वनि। जय भारत माता की। भारत माता की जय एक हाथ से नहीं होती, दोनों से होती है। भारत माता की जय खुली मुट्ठियों से भी नहीं होती, एकता वाली बंद मुट्ठी से होती है। इसलिए आइए आखिर में भारत माता की जय जय वाले अंदाज में, विजय दिवस वाले अंदाज में करें। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जय। May I please request our army band over there to play a heroic tune to salute, sir, for your unwavering commitment to our nation's security and progress. Army band, please. Thank you very much. I'll now request upon stage Sri Annadanam Subramanyam, Secretary of Keshav Memorial Education Society, to felicitate Major General D.K. Purohit. A big round of applause, everyone. Let us give them a big round of applause, everyone. Let us keep our Josh high because we have 2 more sessions to go. जनरल साहब आए हैं, अकेले नहीं आए। जनरल साहब की अर्धांगिनी जीवन संगिनी साथ आई हैं। सेना सैनिक और सेनाधिकारी के साथ मोर्चे पर जाए बिना वे भी लड़ती हैं। एक बार उनके लिए भी करतल ध्वनि।
और आपने मुझे बताया, मैं बात कर रहा था कि जब साहब लड़ रहे थे करगिल में 2 महीने तक उनको पता ही नहीं था कि हैं कहाँ। सियाचिन के लिए निकले थे, वो कहाँ लड़ रहे थे, क्या कर रहे हैं, रत्ती भर खबर उनको नहीं थी। और केवल उनको नहीं, सबको नहीं होती। ये अद्भुत गजब की बात है, किस तरह के उस माहौल में क्या पीता होगा अपने ऊपर, ये आप सोच सकते हैं। आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, आप भी पधारें। Yes, sir. I would request everyone to please settle down. We have 2 more sessions. So moving on, now we have our second session. Now is the time to brace yourselves for an awe-inspiring moment, ladies and gentlemen, as we invite our second moderator, Aditya Puchrevu, a senior leader working for an investment bank, a public speaker, passionate about the country and likes leading initiatives. To invite the unparalleled genius, ladies and gentlemen, the architect of unforgettable cinematic journeys, the one and only V. Vijendra Prasad, the Rajya Sabha MP. Give a big round of applause, everyone. Lights, camera and controversy, unveiling the power of Indian cinema. It's entertainment or propaganda. Did it instill patriotism or incite new generations? The debate goes long. Let's find out the answers from India's legendary storyteller's standpoint. Meet Indian film screenwriter, Member of Parliament Vijayendra Prasad. Filmmakers are storytellers, and through their narratives, they weave the fabric of nationalism, inspiring the masses to stand united in the face of challenges. Good evening, ladies and gentlemen. Today, we have the privilege of welcoming a wordsmith whose pen bleeds the colors of patriotism and nationalism. A man whose stories not only touch our hearts, but also ignites the love for the country. నా దృష్టిలో ఆయన ఒక వ్యక్తి కాదు, ఒక వ్యవస్థ. తన కథలతో, తన సినీ సందేశం ద్వారా మన దేశానికి సేవ చేస్తున్న రచయిత. Let us extend a heartfelt welcome to the patriot's pen himself, Shri Vijayendra Prasad Garu. Can I have the video, please? And may I request Vijayendra Prasad Garu onto the dais, please. Salini kohode, sirigala kohode, sirisirna kohode, yella yella kaara, chayna kohode, dharti hilane, nayal seema kohode, ettara virusale, jhanda, sabduva urime pe lohe ka banda,
ये शोले पंजाबी शोले लगे ना ये शोले तंदूरी शोले कोई कड़काड़ा अल्लाह से जोड़े विजय वार है वीर मराठा शोले किसके भी आगे हाँ तेरा मेरा कौन करे सामना हर तरफ बजे जीत का जय नगाड़ा ये लाल तुम కొడుకు मिंद मन्नेरा थोड़ा सा तंबूरा कोई चलना नारागे वेणुकल चनुरा और झूमे जमाना अभी अभी चक्का बजाओ रे बक्का ताला बिटे आड़े भैया कैता तारा में चमके नाचे जक्का चुपकी तत्ते मोट नाले पल्ला की है एत्तुर मरिग पे लहरा वो झंडा काटल उर्मिने कत्तुआ ठंडा चंगी नवेरिया में कत्ता झंडा हर गली घर में है लुट के पंडा How is the Josh? I said, how is the Josh? Bharat Mata ki. Vande. Vande. All right. If you are really surprised at how this video has arrived on the big screen today, it is a tribute from Sir to all the armed forces right here. And with this proud moment, I would like to request Vijayendra Prasad Garu onto the dais, please. Thank you everybody. And sir, ముందుగా మీరు మాట్లాడతారు సార్. అందరికీ నమస్కారం అండి. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఎవ్రీవన్. మై ప్రొఫెషన్ ఈజ్ లయింగ్, టెల్లింగ్ లైస్. Because I write stories. Stories are nothing but a fiction, but lies. Technically they are lies. Just now I met another liar, Mr. Aditya. Because write stories. A truth comes from the heart. A lie comes when you write something. So what all he told me about me, he's reading something. It's not from the heart. So don't believe what all he said. I am a just ordinary, humble human being. No accolades for me. అంతే. అందరికీ తెలుగు వస్తుందా అంటే వస్తుందా? మన దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. చాలామంది అనుకుంటారు గాంధీ గారు తీసుకొచ్చారు అని చెప్పని. బట్ దట్ ఇస్ సర్ప్రైజింగ్ థింగ్ టు యూ, మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు, చెప్తున్నాను. 1956 ఆ ప్రాంతంలో అట్లీ గారు, హీ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇంగ్లాండ్. మన స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు హీ వాజ్ ద ప్రైమ్ మినిస్టర్. హీ గేవ్ అస్ ద ఫ్రీడమ్ టు ఇండియా. హీ కేమ్ టు కలకటా. అప్పుడు ఉన్నటువంటి గవర్నర్ గారికి ఆయనకి పర్సనల్ ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది. గవర్నర్ గారు హెస్ ఇన్వైటెడ్ హిమ్ టు హిస్ హోమ్ ఫర్ ఏ డిన్నర్. మాటల సందర్భంలో మా గాంధీ గారే కదా స్వాతంత్రం పట్టుకొచ్చింది అంటే, ఆయన గాంధీ గారే కాదు అన్నాడు ఆయన. దెన్ హీ వాజ్ సర్ప్రైజ్. వై? దెన్ హూ? ఏం చెప్పారంటే ఆయన, రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో బ్రిటిష్ తరఫున పోరాటానికి 25 లక్షల మంది, ఒకటి కాదు రెండు కాదు 25 లక్షల మంది సైన్యంలో చేరారు. వాళ్ళ ప్రపంచం అంటే ఏంటో తెలిసింది, స్వాతంత్రం ఏంటో తెలిసింది, సుశిక్షితులు, చేతిలో ఆయుధాలు ఉన్నాయి. సుభాష్ చంద్రబోస్ స్పీచెస్ ఇన్న వాళ్ళలో దేశభక్తి రగిలింది. 20,000 మంది మ్యూటినీ చేశారు. దేశం అంతా ప్రతి చోట తిరుగుబాటు ఎగురుతూ ఉంది. అర్థమైంది తెల్లవాళ్ళకి. వాళ్ళే కనుక వీధిలోకి వస్తే వెపన్స్ పట్టుకుంటే మనం సరిపోము అని చెప్పని పరువు దక్కించుకోవటం కోసం స్వాతంత్రం ఇచ్చారు. దిస్ వాట్ హీ సెడ్. దెన్ హీ సెడ్, వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ గాంధీజీ ఇన్ దిస్? యు నో వాట్ హీ సెడ్? మినిమల్. సో
Indian Army is the one who got us freedom. But unfortunately, వాళ్ళు రికగ్నైజ్ చేయలేదు దేశం. చేయలేదు సరికదా. అప్పుడు చాలామంది మీద కేసులు కూడా పెట్టారు. చాలా రోజులు ఆ కేసులు కూడా నడిచినాయి. డోంట్ హ్యావ్ ద ఫ్యాక్ట్స్. ఎన్నో తెలియదు. బట్ దే సఫర్డ్. దే సఫర్డ్ ద mutiny instead of being honored and felicitated. My humble salutations to all the people who got us freedom. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ ఆల్ ద ఇన్సైట్స్. బట్ కానీ నాది ఒక థాట్ ఉంది సార్. మనం ఇందాక ముందు చేసిన వీడియోలో లాగా వన్ థింగ్ అండి, ఐ గాట్ కరోనా ట్వైస్. 2 చెవులు తినేసిందండి అది. సో మీరు మైక్లో మాట నాకు సరిగ్గా వినిపించదు. సో ఇందాక మనం ముందు చెప్పిన వీడియోలో వద్దండి, కాగితం పక్కన పెట్టండి. మొత్తం కాగితం పక్కన పెట్టండి. సర్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ ద సిలబస్ ఆఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ టుడే. ఇంకొక విషయం చెప్తాను. నేను కథలు రాస్తానండి. ఏ కథ రాసినా చాలా పిల్లలు చాలా చక్కగా వినాయకుడి మీద పాట పాడారు. ఐ వాంట్ టు కంగ్రాచులేట్ దమ్. చిన్నపిల్లలు చాలా బాగా పాడారు. మనందరం చేస్తాం, ఏ పని చేసినా వినాయక వందనం చేస్తాం. కానీ నేను ఇంకో పని చేస్తానండి. ఒక చిన్న పాట నాలో నేను పాడుకుంటాను. నేను చిన్న 4 లైన్ల పాట. దట్ ఆల్వేస్ బ్రింగ్స్ టీయర్స్ టు మై ఐస్. ऐ मेरे वतन के लोगों, ज़रा आँखों में पानी भर के, जो शहीद हुई है उनकी, ज़रा याद करो कुर्बानी. అక్కడ నాకు కళ్ళంట నీళ్ళు వచ్చేది. అక్కడ యుద్ధంలో చనిపోయిన వీరుల గురించి కాదండి. అఫ్కోర్స్ ఐ రెస్పెక్ట్ దెమ్. కార్గిల్లో మంచు కొరికే చలిలో ఒక పక్కన తినేస్తూ ఉంటే సరైన ఎమ్యూషన్ లేకుండా ఆ ఫైట్ చేసిన ఆవేరు గురించి కాదు, వారి యుద్ధాన్ని పంపించినటువంటి వాళ్ళ భార్యల గురించి. నడుచుకుంటూ ఆర్మీ యూనిఫారం వేసుకొని భార్యలాగా ధైర్యంగా చూస్తూ ఆర్మీ జీపెక్కి వెళ్ళిన ఆయన, గర్వంగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన ఆయన ఎప్పుడు వస్తాడో తెలియదు, ఎలా వస్తాడో తెలియదు. నడుచుకుంటూ వస్తాడా, సంకలో కర్రతోటి వస్తాడా, కాళ్ళు తెగిపోతే ఆర్టిఫిషియల్ లెక్కతో వస్తాడా, స్ట్రెచర్లో వస్తాడా, వీల్ చైర్లో వస్తాడా, లేకపోతే గుప్పిడి బూడిదై వస్తాడా తెలియదు ఆ తల్లికి. కానీ ఆ బాధ తన కళ్ళలో చూపిస్తే వెళ్ళే భర్త ధైర్యం తగ్గి ఎక్కడ అణుగడు వేస్తాడో అని చెప్పని ఆ కొండంత బాధ గుండెల్లోనే దాచుకుని వచ్చిన కళ్ళ నీళ్ళు కనిపించకుండా ధైర్యంగా వెళ్ళి రండి అని చెప్పి నా మనసా శిరస పాదాభివందనం చేస్తున్నాను. యు ఆర్ ద రియల్ సోల్జర్స్. మీ భర్తల్లో వీరత్వం నింపడానికి మీరు కారణమమ్మా. మీరేమీ తక్కువ కాదు. ఇందాక వచ్చారు 4 తల్లులు. నిజంగా వాళ్ళ కాళ్ళకి నమస్కారం చేయాలనిపించిందమ్మా నాకు. వీఆర్ ఆల్ ఆఫ్ ఇండియన్స్, వీఆర్ సో గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ ద సర్వీస్ యూ ఆర్ డూయింగ్ టు ద కంట్రీ. మై హంబుల్ సాల్యుటేషన్స్ టు యూ. All right. So this is not going to be a session which happens for one-on-one. So we're going to make all of you a part of this session, and this is going to be an interactive session. So to start with, let us start with a small line. In the song which we saw, Veyara Dandora, Arichappara Vurura, it is equally important. Manandari మీద భుజాల మీద ఉన్న బాధ్యత ఇప్పుడు మన దేశం పడిన కష్టాలు, మన ఆర్మీ సోల్జర్స్ మన కోసం చేసిన సాక్రిఫైసెస్ అవన్నీ ప్రజల్లోకి బాగా తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ఉంది. యాజ్ ఎ హిస్టోరియన్ అండ్ యాజ్ ఎ స్క్రీన్ ప్లేయర్, ఆర్ఆర్ఆర్లో మనం చూసాం సార్ చాలా బాగా తీసుకెళ్లారు. ఇలా ఎలా తీసుకెళ్ళగలుగుతాం ఇంకా బాగా? హౌ డు యూ బేసికలీ పర్సీవ్ ద టాపిక్ ఆఫ్ నేషనలిజం ఫార్ డీపర్ ఇన్ టు ద మైండ్స్ ఆఫ్ పబ్లిక్ ఈస్ సంథింగ్ విచ్ వీ వుడ్ లైక్ టు నో ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సార్. ఎవరన్నా మీ అమ్మ పట్ల అభిప్రాయం ఏంటంటే ఏం చెప్తారండి? పుట్టగానే రక్తంలో ఉంటుంది అమ్మ అంటే ఇష్టం, అమ్మ సర్వస్వం. అలాగే మాతృదేశం పట్ల దాని గురించి ఎవరో చెప్పక్కర్లేదండి. అది మన బ్లడ్లో ఉంది, మన రక్తంలో ఉంది, మన అణువులో నిండి ఉంది. చెప్పుకోవటం కూడా చాలా సిగ్గు చేయటండి. మా తల్లి నేను గౌరవిస్తా అని చెప్పుకోవాలి. సర్టిఫికేట్ ఇచ్చుకోక్కర్లేదు. అది మన రక్తంలో ఉందంతే. అది మన జన్మ హక్కు, అది మన బాధ్యత. Thank you, sir. On the post 5140, I have heard about an inspiring story where Captain Vikram Batra, carrying one of his fellows' shoulders despite the dangerous and challenging terrains, "Ye dil mange more," is a famous slogan.
on that. Kargil Vijay Divas holds a special and immense importance in the history of India. I would like to know from the audience and also from all the armed forces sitting here, do you hold a special memory when you think of Kargil, and what were your reactions that you heard when India and Pakistan are at the war, at the line of control? You gave a speech, not a question. Anybody who would like to basically share their memory when the Kargil war is happening at the border, please raise your hand and the mic will come to you. I have one question to the panel from the topic of patriotism versus propaganda. Like just first floor, you can see me. Here. Yes. So as the topic for discussion is patriotism versus propaganda, and Vijendra sir has a background in cinema. So recently we have seen certain web series which tarnishes the image of armed forces, indulging into certain kind of romanticism and like conveying the wrong message about the wives of armed forces. So this kind of environment where we are not giving any counter product or any counter cinema which make the different kind of image other than the romantic movie whatsoever coming for the armed forces. So my basic question is, how do you see cinema going towards as concerned to the story of armed forces? Not exactly an armed forces, sir. I have written a story in Article 370. How it was harshly imposed by Nehruji's government on the people of Kashmir, how they have suffered till it is abrogated by Modi ji. I already written a story. It is going to be made into a movie very shortly. छोटा सा सवाल, कारगिल पर कारगिल विजय दिवस मनाने के लिए हम इकट्ठा हुए हैं। हिंदी सिनेमा में, क्योंकि मैं हरियाणा से आता हूं, हिंदी में कुछ फिल्में बनी जिसमें कारगिल बता दिया गया लोगों को, नई पीढ़ी के वो काम आ जाती हैं, कभी कभार देख लेते हैं आज की जनरेशन के लोग। दक्षिण भारत का जो सिनेमा है, तेलुगु की ही अगर बात करें, तो क्या कुछ ऐसी फिल्में यहाँ बनी हैं यहाँ के सिनेमा में जो कारगिल की और जो स्टोरीज जो नहीं आई उनको डिपिक्ट करती हैं? क्या बन चुकी हैं या कुछ बनने का स्कोप है क्या? Thank you, sir. I hope I can do it one day with the blessings of Mother Bharat Mata. I hope I can do it one day with the blessings of Bharat Mata. Thank you, sir. Thank you for gracing the occasion with your esteemed presence, sir. We'd now like to request you to please present the Sumadura group, the little dance performers from Ganesh Vandana. Wanted to thank you for the stellar contribution to the Indian cinema and showcasing the vast knowledge of India's history and our rich mythology through Bahubali series and Oscar ki Askaran chupichina RRR ki, and thank you for joining us, Vijendra Prasad garu. Over to Veena. Thank you. Heartfelt thanks to sir. All right, moving on. As I invite our last moderator for the session today,
to step onto the stage and invite our next guest speaker, I'd like to share with you all that our second edition of Mera Kya Conclave is trending on top on Twitter, guys. So if you've not become the part of the trend, the hashtag is Mera Kya Kargil Edition. All right. Please put your hands together now for our next guest speaker and the moderator. As we welcome our next moderator, Mr. Hardeep, editor of JK Now. He will kindly invite now our guest speaker, IPS Sandeep Chaudhary. नमस्कार सभी को। जैसा कि अभी आपको बताया कि अभी ये जो इवेंट है मेरा क्या करगिल एडिशन पूरे देश में नंबर 1 ट्रेंड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ हम यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि पूरा देश इस वक्त करगिल के अमर बलिदानियों को, हमारे वीर जवानों को इस वक्त श्रद्धांजलि दे रहा है और उन्हें सेलिब्रेट कर रहा है इस विजय को। और इसके लिए एक जोरदार ताली आप सभी हमारे वीर जवानों के लिए जो इस वक्त हमारे साथ हैं। और अगले सेशन हमने करगिल वॉर की स्टोरी हमने सुनी, लेकिन एक ऐसा वॉर है जो करगिल से पहले भी और करगिल के बाद भी जम्मू कश्मीर में खास तौर पर इस वक्त चल रहा है, वो है पाकिस्तान का प्रॉक्सी वॉर। उसकी इनसाइड स्टोरी को समझने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान हैं IPS संदीप चौधरी, जो कि इस वक्त SSP साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन जम्मू कश्मीर पुलिस में तैनात हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी जो हमने एक ऑडियो विजुअल तैयार किया है, प्लीज वो प्ले करें। प्लीज सर आप आइए और कुछ बातें हमारी भी और हम सब मिलकर, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर, यंग ब्लड यहाँ पर है जो जानना चाहेगा कि कैसे आप जमीन पर ऑन द ग्राउंड जम्मू कश्मीर में इस प्रॉक्सी वॉर को हराने के लिए, प्लीज। सबसे पहले तो करगिल के युद्ध में जो वीर जवान जिन्होंने इस युद्ध को लड़ा वो हमारे साथ हैं और हम खुशनसीब हैं कि वो आज हमारे साथ हैं। और हम सब जानते हैं कि इस करगिल वॉर ने हम सब की जीवन में, जब हम स्टूडेंट थे, आप भी मैं भी, उसने कहीं ना कहीं हमारे इस लाइफ को एक नई शेप देने में बहुत ज़बरदस्त भूमिका निभाई है। आपसे मैं जानना चाहूँगा, आज आप मैन इन यूनिफॉर्म हैं, तो आपकी ज़िंदगी में करगिल वॉर की क्या स्टोरी है, क्या पर्सनल वो चीज़ रही कि जिसने आपकी ज़िंदगी में कुछ उसको बदलने की कोशिश की? Jai Hind to everyone. I can't speak Telugu, but still I give you 3 options: English, Hindi, Punjabi. So which one are you most comfortable with? हिंदी और इंग्लिश में टॉस है, कौन सा? ऐसा करते हैं, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करते हैं क्योंकि पंजाबी का ऑप्शन यहाँ नहीं है, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करते हैं। जी ठीक है। अभी आपने जो क्वेश्चन पूछा, कारगिल वॉर की अपनी पर्सनल यादें होती हैं। पीछे जो बच्चे बैठे हैं इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उस टाइम पैदा भी नहीं हुए थे। दे वर नॉट इवन बॉर्न एट दैट टाइम। आई वॉज इन स्कूल, मैं स्कूल में था उस वक्त, और मेरा गांव पंजाब में है, विच इज़ रफली 2000 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर। यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है। एंड माई विलेज, डिस्पाइट बीइंग इन इंडिया, इज़ 2000 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हैदराबाद, but is roughly 20 kilometers from Pakistan. So during Kargil war, actually the entire Operation Vijay and everything, जो border villages होते हैं वो सबसे पहले खाली करवाए जाते हैं whenever the war is about to take place. तो हमारा गांव भी उस वक्त में खाली हुआ था,
मेरी अपनी पर्सनल याद ये है कि nobody complained. Like if somebody comes and tells you in Hyderabad ki vacate your house right now and we don't know when you'll come back, just pack your essential things and leave. I don't know how you will react. But the villagers in Punjab, Rajasthan, Jammu and Kashmir, these three states and Gujarat, in various pockets, वहाँ पर लोगों को उनके घर खाली करने को बोला गया होगा उस वक्त में. एंड आई डोंट थिंक उन करोड़ों लोगों में से किसी एक भी आदमी ने कंप्लेन की होगी कि नहीं मैं अपना घर नहीं खाली करूँगा. तो जो पेट्रियटिज्म है वो इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस. अब आते हैं उस चीज़ पर जिस हम बात करने वाले थे कि एक वॉर, करगिल वॉर तो हमने जीता, लेकिन एक वॉर करगिल से पहले भी और करगिल के बाद भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से प्रॉक्सी वॉर चल रहा है टेररिज्म के जरिए. आप वहाँ पर एज ए पुलिस ऑफिसर आप वहाँ पर तैनात हैं. मैं कुछ परिचय में बता दूं कि इससे पहले संदीप चौधरी एसएसपी अनंतनाग, जो कि साउथ कश्मीर का एक वो ज़िला है जिसको कभी जो बड़ा आतंकवाद प्रभावित हुआ करता था, शोपिया एक ज़िला, वहाँ के एसएसपी रहे हैं, श्रीनगर के एसएसपी रहे हैं और अभी साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में हैं. तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो एक्सपीरियंस आपका रहा है, क्या कैसे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है जो फ्रंट में रहती है, कैसे इस प्रॉक्सी वॉर को टैकल करती है, कैसे इसको रोकती है और कैसे इसको खत्म, हम देख रहे हैं कि लगातार खत्म होते जा रहा है. आप इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, हम जानना चाहेंगे कैसे आप लड़ते हैं. The present foreign minister of Pakistan, Bilawal Bhutto, his grandfather Zulfikar Ali Bhutto was the prime minister of Pakistan. In 1965, Zulfikar Bhutto gave a speech in the United Nations. तो जुल्फ़िकार भुट्टो ने यूनाइटेड नेशंस में खड़े होकर ऐलान किया था कि वी विल वेज 1000 years वॉर अगेंस्ट इंडिया. 1000 साल तक हम हिंदुस्तान से लड़ेंगे. Sometime later, Zulfikar Ali Bhutto was hanged by his own army chief, Ziaul Haq, and he became the president of Pakistan. Then Ziaul Haq कॉपी नहीं कर सकते थे जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बोला था. So he had to make a contribution अपनी ज़बान में. तो उन्होंने कहा नहीं 1000 years war छोड़ दो, we will bleed India by 1000 cuts. तो जो प्रॉक्सी वॉर की आपने बात की, इट इज़ पार्ट ऑफ दैट. पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान आर्मी का, ISI का, who subscribe to this theory of bleeding India by 1000 cuts. They try to bleed India in Punjab. They have been trying to bleed India by various cuts in Jammu and Kashmir. तो ये जो प्रॉक्सी वॉर है, ये हमेशा इसमें कभी उतार आता था, कभी चढ़ाव आता था. जहाँ पर एक डिसाइसिव डिसीजन लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनकी अगुवाई में आर्टिकल 370 एक चीज़ जो जम्मू एंड कश्मीर में कर रहा था वो था एक्सेप्शनलिज्म टेबल पर ला रहा था. वो जब आपने 370 हटा दिया तो आपने जो एक एक्सेप्शनलिज्म की थ्योरी जो इतने सालों से चल रही थी वो इमीडिएटली इक्वेशन से बाहर कर दी. तो उसके बाद जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस है, इन सब को मिलकर ये आसानी हो गई कि अब जो प्रॉब्लम है इससे लड़ा जाए बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह कंट्री में बाकी कहीं लड़ा जा सकता था. इट हैज़ एम्पावर्ड इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस लाइक एनीथिंग. और आगे से आगे स्थिति आपके सामने है, चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं. एक और चीज़ जो देख रहे हैं कि रिकॉर्ड कह रहे हैं, भारत सरकार भी संसद में कह रही है कि जो द नंबर ऑफ टेररिज्म इज डिक्रीजिंग. सो इज इट ट्रू? और हमें ऐसा लगता है कि जो टेररिज्म जो मॉड्यूल्स हैं दे आर इन हाइबरनेशन मोड. तो कैसे इसको देखेंगे? वो हो सकता है कि सही वक्त का इंतजार कर रहे हों, उनके नंबर्स जो हैं वो घटे ना हो और वो शायद वक्त का इंतजार कर रहे हैं. आप इसको कैसे देखते हैं? कैसे आप इसको क्या वाकई नंबर सही कम हुए? 2018 में 2018 मैंने शोपियान डिस्ट्रिक्ट में एज एसएसपी ज्वाइन किया था. उस टाइम आप इमेजिन कीजिए, सिर्फ शोपियान जिला में लोकल जो टेररिस्ट था दैट वाज मोर देन 70. और उसमें आप पाकिस्तानी जोड़ दीजिए, एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट में
लगभग 100 के आसपास टेररिस्ट था। अगर आज आप डेटा मंगवाएंगे तो पूरे कश्मीर में भी इतना टेररिस्ट नहीं है। सो इट इज़ राइट, द नंबर्स हैव कम डाउन। Numbers have come down through the sacrifices of countless soldiers from Indian Army, Central Armed Police Forces, and Jammu and Kashmir Police. I'll give you an example. मेरे जो पहले 6 months थे शोपियान में, I lost 16 of my boys. मैंने 16 coffins उठाए हैं 6 महीने में. Imagine seeing the dead bodies of your 16 boys being sent to their families almost on monthly basis. एक ऐसा वक्त भी हमने कश्मीर में देखा है। 2016 में when बुरहान वानी got killed, उस समय मैं एसपी साउथ श्रीनगर था। तो मैंने वो पत्थरों की बारिश देखी है और ये सारी चीज़ें देखी हैं कि कहाँ से लेकर जो आज आप कश्मीर देखते हो, ये बहुत लंबा डिस्टेंस तय हुआ है। किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में 6-7 साल का पीरियड कोई लंबा पीरियड नहीं होता है, लेकिन कश्मीर में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है पिछले 6-7 साल में, इट इज इमेंस। नोबडी कुड हैव इमेजिन्ड इट। दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंस जब आप एज अ कंट्री सोच कर चलते हैं कि हमें करना क्या है। दिस इज हाउ यू मेक अ डिफरेंस। आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। जैसे 1000 ईयर बैटल वॉर की बात थी, उसी तरह बहुत से यंग बच्चे हैं, आप सुनजू की कोट्स देखते होंगे, ज़्यादा इंस्टाग्राम पे देखते हैं। सो सुनजू हैड सेड कि ची चपी पूताए चनपी। लाइक इफ यू नो योरसेल्फ, इफ यू नो द एनिमी, you will not lose in 100 battles. This is where our country has improved. We knew enemy more or less. We knew that Pakistan is causing these problems. But what we didn't know is what is causing the problem inside us. We didn't know ourselves. What has changed is हमने अपने आप को समझना शुरू किया है। जब आप अपने आप को समझेंगे तो आपको अपनी कमजोरियां और ताकतों का पता लगता है। You combine them with the weaknesses and strengths of your enemy, and then you are in a better position to defeat them. And this is what has happened in Kashmir. आपने कहा कि now we know our enemy well, तो एक बात हमारी यहाँ ऑडियंस भी बड़े अच्छे से जानती है और वो भी बड़े अच्छे से पहचानती भी है कि एनिमी जो है वो बॉर्डर के उस पार नहीं है, बॉर्डर के इस पार भी है, और आप इसको लेकर बड़ा वोकल रहे हैं। अक्सर मैंने आपके आर्टिकल देखे हैं कि जर्नलिस्ट की शक्ल में, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की शक्ल में बड़े बड़े जो यहाँ पर हमने देखा एडवोकेट्स हैं, ह्यूमन राइट एडवोकेट्स हैं, वो लगातार उस नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं जो कि पाकिस्तान आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आप उस दुश्मन के बारे में क्या कहेंगे? आप अक्सर अपने आर्टिकल्स में उनके बारे में बोलते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। रूबी जान नाम की एक पुलिस में हमारे पास बहुत यंग लड़की काम करती थी शोपियान में, जहां मैं एसएसपी था। 2018-19 के पीरियड में टेररिस्ट बार्ज्ड इनटू हर हाउस, उसके घर में गए और उस लड़की के मुंह पर गोली मार दी। Imagine shooting a girl, a defenseless girl without a gun or weapon. These terrorists went to her house and shot her in her face. And the same terrorist, when he got killed, अगले दिन जो न्यूज़पेपर में आया, 2 militants killed. 2 militants killed. I actually got agitated on that, not as a policeman, as a human being, कि मुझे पता है कि इन लड़कों ने उस लड़की को किस तरह मारा था. And still you are calling them militants, freedom fighters, rebels, ultras. Then I wrote an article उस टाइम पे कि आप इनको militant, rebel, ultra वल्ट्रा कहना बंद करो. They are plain simple terrorists. When Osama bin Laden was killed, do you know the Time magazine on its front cover just put a picture of Osama and a red cross कि मार दिया. This was a message to American people. See, this is how we deal with enemies of
America. On the other hand, a similar enemy gets killed in India, and our media calls them militant, rebel, and all this. This was my appeal at that time. This nonsense has to stop. This is our country. Anybody who is against my country is a terrorist for me. We'll kill them when we can, but they are no militants for us. Well, we are proud of you. अब कुछ क्वेश्चंस लेने की कोशिश करते हैं कि जो यंग ऑडियंस हमारे साथ है वो एक जो आईपीएस ऑफिसर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं जो कि फ्रंट में हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में कहीं भी कोई ऑपरेशन होता है तो सबसे फ्रंट में होती है जम्मू कश्मीर पुलिस और फिर बाकी फोर्सेस होती हैं. अगर आपका कोई सवाल हो तो प्लीज. I'm Aishwarya. So what is your valuable message to the present youth of our country on nationalism? I see these days like nationalism की स्टेज से पहले एक स्टेज होती है empowering yourself. See, where I see a lot of people losing the track is आजकल बहुत सारा टाइम ना बच्चे ये इंस्टा पे रील स्क्रॉल करने में बहुत वेस्ट करते हैं. उसमें if you ask somebody, sir, no sir, I am getting motivated on Instagram. तो ये जिससे मोटिवेट हो रहा है, that person is actually trying to make himself or herself famous, and you end up wasting 3-4 hours of your day. So my very basic appeal to youth is, please don't waste too much time on Instagram. आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत अच्छे हो, but don't waste too much time. And you are actually losing that precious time of your youth, जिसमें आप actually कुछ अच्छा कर सकते हो. And when it comes to nationalism, let me be very clear. If you are not strong as an individual, you can't contribute to this nation. Empower yourself, build your careers, support your families. सबकी families के बहुत छोटे छोटे sacrifices होते हैं. जिस तरह हमने अपने कारगिल वॉर हीरोज़ के sacrifices की बात की, उसी तरह आप घर जाके देखना, your parents make sacrifices every day. जब आप कहते हो ना पापा मुझे ये लेना है, you don't even realize. मैं realize नहीं करता था उस वक्त में कि अगर मैं कोई चीज़ मांग रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि my mother or my father, how are they going to arrange money for this. So on the path to your contributions towards nationalism, first try to build yourself as strong individuals, accomplished people who have done something in life, then contribute to the nation. When you build yourself, contribution to nationalism will come automatically. कोई और सवाल? Good evening, sir. My ex-serviceman, नायक डी दैवादिनम साहब, ये जम्मू कश्मीर में घर लेके रहने वालों को कोई लोकल पीपल से कोई दबाव, कोई ऐसी डराना वगैरह होता है क्या साहब आपका नज़र में? थोड़ा बताएं सर, आप उसके लिए क्या क्या करते हैं जी, कार्रवाई क्या करते हैं? थैंक यू. हाँ, इसमें बहुत मैं वही कह रहा था, चीज़ें इम्प्रूव हो गई हैं. अभी आप सोचिए कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरी फैमिली तो जम्मू कश्मीर में ही है, मेरे बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, माई वाइफ वर्क्स देयर, तो द बिजनेस गोज ऑन एज यूजुअल. चीज़ें बहुत इम्प्रूव हो गई हैं. और आप घूमने आइए, पेंशन अच्छी खासी आती है, थोड़ा खर्चो, घूमो. वैसे लोग घूम रहे हैं. इस बार हमने देखा कि पिछले 2-3 सालों में जो रिकॉर्ड जो टूरिस्ट ना सिर्फ जम्मू में गए हैं बल्कि कश्मीर में भी रिकॉर्ड, और इस बार खास तौर पर हम देख रहे हैं कि बाबा अमरनाथ की यात्रा में भी रिकॉर्ड नंबर्स वहां देखने को मिल रहा है. कोई और सवाल हो तो प्लीज. हेलो सर. Sir, this is Bhaskar from University of Hyderabad, and my question goes back to 1 and 5 years back when our NSA said that कि जो अगला युद्ध क्षेत्र होगा वो कम्युनिटी वॉरफेयर होगा, जहाँ पे कि कम्युनिटी में हमारे दुश्मन होंगे. तो आपका कश्मीर एक्सपीरियंस क्या कहता है कि इंडिया के दूसरे पार्ट में भी कम्युनिटी वॉरफेयर हो सकते हैं, या फिर जो इंटर स्टेट हो या जो दूसरे स्टेट से प्रॉक्सी आ रहा है वैसे ही चलता रहेगा? I agree with you the direction in which you are pointing. लेकिन as I said कि अगर यूथ को हम सही डायरेक्शन में रखें
like if they concentrate on themselves, अपनी लाइफ बनाने के लिए सही तरीके से अगर चलेगा तो वो बच्चा बाहर जाकर गड़बड़ नहीं करेगा. So our priority should be to motivate our youth, to keep them in right direction towards building their careers, towards improving the economic situations of their families. These are very basic things. ये चीज़ें इस देश में कभी चेंज नहीं हुई हैं. जो इंडियन मिडिल क्लास जिस चीज़ पे सस्टेन किया है वो इसी चीज़ पे किया है कि हर जनरेशन्स पिछली जनरेशन से बेटर करती है. सो आई डोंट थिंक कि हमें उस चीज़ से कोई ज़्यादा हटना चाहिए. वी शुड कीप गोइंग इन दैट डायरेक्शन. थैंक यू. कोशिश लगातार हो रही है लेकिन कामयाबी ना मिली है ना मिलेगी. और ना सिर्फ अब तोड़ने की छोड़ी, अब ये सोचिए कि पाकिस्तान के कब्जे में जो POJK है उसको कैसे लिया जाए. अब मेरे ख्याल है कि इस सेशन को यहीं पे खत्म कर. सो thank you very much, sir. I'd like to thank IPS Sandeep Chaudhary for gracing the occasion with his esteemed presence here. May I please invite on stage Dr. Tirupati Rao, Chancellor of Manipur University, ex-Vice Chancellor Osmania University, President JKSC Telangana, to felicitate IPS Sandeep Chaudhary. Followed by a big round of applause, please. So now I'll request our partner patrons to come on stage and felicitate the army veterans present here, to grace the stage and felicitate them. So my team will play a video to pay tribute to the army veterans first, and then we'll follow the felicitations. As a soldier, we should not go with the emotions. That's what I feel. In 1999, they faced the storm. Infantry which was fighting there, it's a scene to watch actually. The kind of way that they were actually doing things is really memorable, and I will not forget the way things have moved out there on that place. We were watching very closely just behind them. They stood tall, they stood strong with unwavering resilience. हम ऊपर जा रहे हैं, जैसे हमको वेलकम कर रहा है. चलो मैं हो गया आपके बारे, उसको छोड़ना नहीं. Courage and honor is their uniform. Now, we gather to honor their might. Let's salute our living legend. May I please request Shri Sanjay Kamtam, the founder CEO of Votary Tech Solutions, to come up on the stage and felicitate our army veterans. We'll move on
on to our next Army veteran, Colonel G. Harnath. Kargil War veteran Subedar Raja Rao. Please request our next Kargil War veteran Subedar Nutala Kishan to please come up on the stage. JWO Joji. Srinivas Velagupudi, with nearly 2 decades of experience in the real estate sector, Srinivas Velagupudi has played an important role in shaping the industry's landscape. May I please also request Mr. Praveen and Jayachandra from Province. As we conclude this historic evening, everyone, let us express our gratitude to all the Army veterans, Kargil War heroes present here and their families. We'll now request everyone to rise for national anthem as we conclude the event today. Thank you so much, everyone, for taking out your time from your busy schedules and making it to here to grace the occasion and making the evening wonderful. Thank you so much, everyone.